Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you will be fine and enjoying good health at home. Today, as you can see, we are going to start our past tense. और past tense में सबसे पहले we are going to take a start with the simple past tense. As you know it very well, and I have already explained it to everyone, कि simple past tense is commonly used nowadays instead of saying इंडेफिनेट भी यूज़ होता है, नो डाउट दैट हैज़ नॉट बीन लेफ्ट, अभी इसको छोड़ा नहीं गया, लेकिन फिर भी मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं इस टेंस के लिए, इंडेफिनेट के लिए, तो उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर. तो दैट शुड नॉट बी अ स्ट्रेंज थिंग फॉर यू नाउ. Now we are commencing it with a very interesting type of a sentence, that is, yesterday I went for a swim. Yesterday is telling you the time, that is the time expression which we mostly use in this tense. I is the subject, went mean gaya for a swim. So you have observed after the subject we have applied the second form of the verb. So let's discuss it in detail. फर्स्टली वी विल डिस्कस द रेगुलर वर्ब्स, वो क्या होते हैं और इरेगुलर क्या होते हैं. मैंने अपने एक प्रीवियस लेसन में भी आपको समझाया था. अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तो आपकी मिस्टेक्स आपके काम में कंटिन्यूसली आती रहेंगी. टू ओवरकम योर मिस्टेक्स यू हैव टू मेमोराइज दैम. इनको बैठ के याद करना बहुत ज़रूरी है. नाउ डेज यू आर फ्री एट होम, you don't have the extra, I mean, any activities to coming to school and spending 6 to 7 hours here. Rather you can spend more of your time with the studies now. अभी बैठ के आप इनको गूगल भी कर सकते हैं. इफ़ यू डोंट हैव एनी ग्रामर बुक विद यू, तो आप इनको वैसे भी ग्रामर बुक से भी याद कर सकते हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स को, क्योंकि बाद में व्हेन इंशाल्लाह योर स्कूल विल स्टार्ट, तो उस वक्त आपको बहुत कम टाइम मिलेगा. Firstly, we are going to discuss the affirmative sentences. The past tense of regular verbs is formed by adding d or ed to the base form of the verb. For example, I worked in a shop last year. I lived in a big house when I was younger. You might have noticed we have used ed with the first form of the verb when we are forming the affirmative sentences. Affirmative sentences are the sentences which are neither negative nor interrogative. Rather, these are called assertive or positive sentences. Ed has been added here, and similarly we have added d with the first form of the verb, that is called the second form of the verb or past form. I worked hard last week. So with the application of firstly subject, second form of the verb, and then the rest of the sentence will be formed. Moving forward, let's discuss some of the irregular verbs. What are the irregular verbs for affirmative sentences? We need them. So क्योंकि इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं कर रहे होते, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत होती है, इसको हम अप्लाई कर सकें. स्पेशली द क्वेश्चंस विच बिगेन विद द वर्ड डिड, तो उनके आंसर्स में जब हम उनके आंसर लिख रहे होते हैं तो वी नीड द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि वहाँ आंसर में डिड मोस्टली नहीं लगता. Irregular past forms, I mean verb forms, must be learned because they don't follow any rule. इनको सिर्फ याद करना ही इनका सोल्यूशन है. इनके साथ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये डी ऐड करने से या ई डी ऐड करने से सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाते हैं. नो, यू कैन सी सम ऑफ देम. गो इज़ इन सेकेंड फॉर्म वेंट, कम इज़ केम, buy is bought, drink is drank, eat second form is ate, find second form is found, and see has its second form in the form of saw. अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तो फिर the things will go wrong, so please memorize them well. Moving forward to the next thing, and that is forming of negative sentences. अच्छा, let me explain it to you. For forming negative or interrogative sentences in this tense type, like simple tense में हमें simple past tense में एक ही helping verb चाहिए, and that is did. Only one helping verb is used here, and that is did. As I have already explained it to you कि जब भी हमें not लगाना होता है, when we are forming the negative sentences, we always need
a helping verb for applying not in our sentences. Without the helping verb, we cannot apply the word not. That becomes wrong because mostly I have observed in the working of the student, they apply the word not for forming the negative sentences without using any helping verb. So, every sentence and its every tense and its tense types have their different helping verbs. हेल्पिंग वर्ब्स को मेमोराइज करना पड़ता है कि किस टेंस टाइप का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है. तो सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब एक ही है, दैट इज़ डिड. उसके साथ वी हैव अप्लाइड द वर्ड नॉट, डिड नॉट, एंड इट्स कंट्रैक्टेड फॉर्म इज डिडेंट. देन रिमेंबर, जो चीज़ हमने ख़ास तौर पे याद रखनी है वो ये है कि इसके साथ फिर वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल होती है. बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म. जब भी डिड का वर्ड आप यूज़ करेंगे तो सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे. दैट इज़ अनदर मिस्टेक दैट इज़ मोस्टली और जनरली observed in the working of the students, to please avoid this also. आपको इसको भी रिमेंबर करना है कि जब भी हम डिड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. ओके, सो हियर व्हाट द स्टेटमेंट इज टेलिंग यू, यूज डिड नॉट और डिडेंट प्लस a base form verb to make the simple past simple tense negative. For example, I didn't work last summer. I didn't live in a flat during my last summer holidays. I did not go to Berlin last July. Here you can observe we have applied verbs first form when we have used the word or helping verb did here. Hope you have understood. Moving forward, now let's discuss how do we form the interrogative sentences. When we have to make the questions in this tense, I mean simple past tense, we need to use the helping verb did, and that did will be applied at the beginning of the sentence. जब भी सेंटेंस को आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए तो वी हैव टू अप्लाई डिड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. उसके शुरू में लग जाएगा. यूज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म वर्ब टू मेक द पास्ट सिंपल इंटरोगेटिव. Did you play sport last summer? That is an example of it. Let's discuss another example. Did you travel by boat last holidays? And a question mark will be applied. You see, without applying a question mark, the question stays incomplete. Did you see any dolphins? No, I didn't. So these are some of the answers. These questions which begin with the helping verb mostly are answered with yes or not. There is a table for you for affirmative sentences, negative, and questions and their short answers. Let's discuss the affirmatives first. With all the subjects, whether they are he, she, it, or I, we, they, you, we apply verbs second form. While making the negatives, we use a helping verb did in order to apply the word not here. नॉट लगाने के लिए हमें डिड चाहिए जो कि इसका हेल्पिंग वर्ब है पास्ट सिंपल टेंस का. उसके साथ यू हैव ऑब्जर्व्ड कि इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई की है. यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी वर्क्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आई डिड नॉट वर्क. दैट इज़ अ डिफरेंस. किस वजह से डिफरेंस आया है? विद एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड डिड. Then we have made the questions. For making the questions or interrogative sentences, we have applied did at the beginning of the sentence, then subject, and then verb first form. Like did I work? Did he work? Did she work? In the same. अगर तो आंसर आपका हाँ में है तो you will use yes, और अगर आपका आंसर not में है तो you will use the word no. अच्छा, there are some things, there are some facts why we use this tense. The usage to talk about actions that happened at a specific time in the past.
You state when it happened using a time adverb. इसके साथ time adverb यूज़ होते हैं like yesterday, last month, previous week. ठीक है, तो लास्ट ईयर आई टुक माई एग्ज़ाम्स, ये है इसका टाइम एक्सप्रेशन. इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब इवेंट्स दैट हैपेंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट बट नॉट नाउ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लिव्ड इन एशिया फॉर 2 years. अच्छा, नंबर 3, इट इज़ ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट हैबिचुअल और रिपीटेड actions that took place in the past. When I was a child, we always went to the seaside on bank holidays. These are some of the uses we do in this tense. Time expressions are the following: yesterday, last month, last year, last time, ago, and so on. My friends traveled to Saudi Arabia 2 years ago. Let's have a look again, and then I'll assign you some work. For making affirmative sentences, what we do, we apply subject at the start, then we add verb in base form or past tense of the verb, then complement is added, rest of the sentence. For example, Tom visited us last week. I ran in the competition. Tom is the subject, visited is the second form of the verb or the past verb. I is the subject, ran is the second form of the verb we have applied here. For forming the negative sentences, we use subject, did not, verb in base form, and then complement. Tom did not visit. Note down the change here, change in the application of the verb form, visited, and did के साथ we have used the word visit. I did not run in the competition. तो did के साथ हमने not का application किया for forming the negative sentences. For forming the interrogatives, did plus subject plus verb in base form and then complement. Did Tom visit you last week? So there are some informative questions जिसमें हमें कुछ डिटेल्स चाहिए होती हैं. उसके लिए हम WH word questions यूज़ करते हैं like where, when, how, why, whom and so on. WH word question, then did, then subject और उसके बाद verb in base form and then complement. Where did you run last year? Hope you have understood it all. अब you have been assigned with the work. You please capture or grab a screenshot of it. आपने ये काम करना है. Fill in the blanks. Complete the following sentences with the past simple tense of the verb given to. Verb इसमें bracket में like go, decide, hurry, walk के साथ verb की first form use करते second form use करते हुए fill in the blanks. Then please read the sentences and rewrite them as negative sentences. So students, I hope you have understood. Please do your work. And if there is any query, you can ask me. Allah Hafiz and have a nice